अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल एमसीक्यूज़ के पार्ट 9 को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट? ऑप्शन ए इज इक्वल सम ब्रैकेट A1 रेशो A5 minus 10. Option B is equal sum bracket A1 ratio A5 bracket 10 minus 10. Option C sum bracket A1 ratio A5 multiply 5. Option D is equal sum bracket sales minus A3. The correct answer is option D is equal sum bracket sales minus 3. Question number 2 is, to copy cell content using drag and drop, press the option A escape key, option B control key, option C shift key, option D end key. The correct answer is control key. Question number 3 is, each Excel file is called a workbook because option A you have to work hard to create it, option B it can contain many worksheets and charts, option C it can be modified, option D it can contain text and data. The correct answer is option B. It can contain many worksheets and charts. Question number 4 is, which buttons do you click to add up series of numbers? Option A, the total button. Option B, the quick total button. Option C, the formula button. Option D, the auto sum button. The correct answer is option D, the auto sum button. Next question is, which function will you use to enter current time in a worksheet cell? Option A is equal time brackets. Option B is equal now brackets. Option C control plus shift plus. Option D is equal today brackets. The correct answer is option C control plus shift plus. Next question is, which of the following is not a valid zoom percentage in Excel? Option A 500, option B 300, option C 100, option D 400. The correct answer is option D 400. Next question is, when you insert an Excel file into a Word document, the data are option A embedded, option B linked, option C placed in a Word table, option D hyperlinked. The correct answer is option B linked. Next question is, macros run or executed from the dash menu. Option A data, option B view, option C format, option D insert. The correct answer is option B view. Next question is, how are data organized in a spreadsheet? Option A height and width, option B rows and columns, option C layers and planes, option D lines and spaces. The correct answer is rows and columns. Last question is, which type of charts can Excel produce? Option A bar charts and line graph only. Option B bar charts, line graphs and pie charts. Option C only line graphs. Option D line graphs and pie charts only. The correct answer is option B bar charts, line graphs and pie charts. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद एमसीक्यूज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट myMCQs.net विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।